Yes, Gulnaz. Hello, everyone. Let me introduce Brenda. Brenda Mcintosh is a registered nurse, certified diabetes educator who worked at Wellford Community Health Services as a member of Diabetes Education Program. Brenda has been a registered nurse for more than 30 years and has been working in diabetes education for the past 15 years. She provides one-on-one and group education for those living with type 2 diabetes, pre-diabetes, or those at risk of developing diabetes. Fostering client self-management skills to live healthy, a lifestyle with the hope of prevention of long-term complications associated with chronic condition. Her passion of diabetes education stems from her interaction with family and friends who live with type 1 or type 2 diabetes. Increasing community awareness around diabetes prevention and diagnosis drives Brenda in her professional commitment to community and the clients of whom she sees on a day-to-day basis. And our welcome, Brenda, and our next presenter is Meghana. Let me introduce Meghana. Hi, Meghana. Meghana is a registered dietitian and a certified diabetes educator, currently working with the Diabetes Education Program at Wellford Community Health Services. In Brampton, she provides one-on-one counseling and a group education to individuals living with type 2 diabetes or pre-diabetic or at risk of developing diabetes. She is committed to raising awareness about diabetes by participating in various community events and other diabetes prevention initiative. Meghana has almost 25 years of experience in the field of dietetics, 13 years specifically in diabetes. Prior to moving to Canada, she has practicing in India and Middle East. Besides writing articles of various publications and leading magazine, and participating in radio interview, cooking, formulating recipes has been her passions. So welcome, Meghana and Brenda. Thank you. Now, floor is yours. Okay. Start your presentations. Awesome. Thank you so much for having us here tonight. Amber has expressed what a wonderful group of individuals you are. And she said, we're really going to enjoy this interaction with you. So I'm really excited to share some of our knowledge, and we're always open for questions. Okay. All right. Did I lose you, Meg? No. Yeah. Okay. Okay. All right. So our topic today is going to be taking care of your feet. So especially if you're living with diabetes, you want to make sure that you're paying attention to those things that get you from place to place. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुट केयर, जो है पैरों की देखभाल डायबिटीज में, और वो बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. Okay. Oh, Meg, are we now the host? Because it's showing. Yes, it looks like so. I just noticed. Yeah. So did you let that? Yes. Yeah. Okay. Perfect. Okay. So I'm going to get started. So, as you know, there's a lot to manage when you're living with diabetes, like checking your blood sugar, making healthy food, finding time to be active, or even taking your medications. So जब हम डायबिटीज के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें आती है ना. सो डायबिटीज में जो है टाइम टू टाइम दवाइयां टाइम से लेनी है, हेल्दी ईटिंग, खाने पीने का उस पर ध्यान रखना पड़ता है, हमारी एक्टिविटी, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डायबिटीज कंट्रोल के लिए जरूरी हैं. So with all of that you're trying to manage, often we forget about taking care of our feet. तो ये सारी चीजें हम मैनेज करते करते हम पैरों की देखभाल के बारे में
भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि वो भी जरूरी है ना. So the problem with uncontrolled blood sugars is often people might have some nerve damage, which can impact the nerves going to their feet. So अक्सर क्या होता है कि इसमें जो है कि नसों पर असर पड़ सकता है, और जब नसों पर असर पड़ता है तो ये जो नसें जो पैरों की तरफ जाती है उस पर भी असर पड़ता है. तो उसमें जो है, उसमें जो खून का बहाव है और उन चीजों पर वो नसों की वजह से असर पड़ सकता है. Okay, so some people with the nerve damage often might experience numbness, tingling, or pain in their feet, and some may have no symptoms at all. तो वो नर्व डैमेज की वजह से, क्योंकि नसों पर, अगर नसों पर नुकसान हो रहा है या उस पे हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है कभी कभी पैर सुन पड़ जाते हैं, सो जाते हैं. कुछ लोगों को ऐसा लगता है वो चींटियां चल रही हैं पैरों पर. सो अलग अलग ये नसों पर अगर असर पड़ता है तो ये हो सकता है. कुछ लोगों को ये महसूस हो सकता है और कुछ लोगों को महसूस भी नहीं होता है. I know people are thinking, okay, but if I don't feel the pain, then that's good. Well, no, because if you have nerve damage, sometimes you're not able to feel pain. So if you injure your feet, or they are cold or they're hot because something spilt on them, you're not going to feel that if the nerves are damaged. तो अगर नसों पर असर पड़ता है तो अक्सर ये होता है कि कोई गर्म चीज या ठंडी चीज आपके पैर पर गिर भी जाती है तो आपको पता भी नहीं चलता है उसका, क्योंकि वो नसों पर असर पड़ चुका है ना. So anybody with diabetes can develop nerve damage, especially if blood sugars are not controlled. So जिससे भी डायबिटीज है, जिससे भी वो नसों पर असर पड़ सकता है, और स्पेशली अगर आपकी ब्लड शुगर्स कंट्रोल में नहीं है तो अक्सर जो है नसों पर सबसे पहले असर पड़ता है. And living with diabetes for a long time, where you've been battling your blood sugars for a long time. तो अगर आपको जो डायबिटीज होने जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे साल गुजरते हैं, और ज्यादा ये है कि वो नसों पर फर्क पड़ सकता है. Okay. The other thing that can happen is when you're carrying extra weight, if you're over 40 years of age, have high blood pressure, and you have high cholesterol, those can also increase your risk of nerve damage if you're living with diabetes. So अगर उम्र के हिसाब से, so अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है, अगर आपको बाकी कंडीशंस है, so अगर जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, और शुगर के साथ साथ ये बीमारियां भी हैं, तो इससे भी असर पड़ सकता है. So I know you're all sitting there thinking, Brenda, what can I do to maybe potentially not cause nerve damage? I know you're all thinking that, right? So आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या कौन सी चीजें क्या कर सकते हैं जिससे हमारी नसों पर नुकसान ना हो और वो डैमेज से हम बच सकें. Okay, so some of the things that we can do to hopefully prevent nerve damage. So if you're a smoker, you might want to stop smoking or decrease the smoking and eventually quit. I know you ladies are probably not smokers, but we can't assume, right? So जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो अगर वो स्मोकिंग बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं तो उससे भी, क्योंकि उससे स्मोकिंग से अक्सर जो है नसों पर असर पड़ता है. सो जो लेडीज हैं, आई नो कि बहुत हम लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, ज्यादातर मेन, बट जैसे ब्रेंडा ने कहा, हम अस्यूम नहीं कर सकते ना. सो स्मोकिंग इसको इधर बंद करना या कम करना है. Okay, so as Meghana and Amber always talks about, is working on eating a healthy meal, eating healthy meals, healthy meal plans. So हेल्दी खाने के बारे में बात करते हैं ना, हम हेल्दी डाइट रखना जरूरी है, और आपके जो मील्स हैं वो हेल्दी, वेल बैलेंस्ड होने चाहिए. And I know you're all waiting to tell me, oh, Brenda, getting physically active is going to help too. So making sure that you're exercising and getting a minimum of 150 minutes of moderate paced activity per week is really important. So physical activity, जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना हम हेल्दी और तंदुरुस्त भी रहेंगे, और उतना ही नसों पर कम डैमेज होगा ना. तो वो यूजुअली जो रिकमेंडेशन है वो है 150 मिनट पूरे हफ्ते के लिए.
So अगर ये हम जितना एक्टिव रहेंगे उतना हमारी सेहत के लिए अच्छा है. Okay. And the last thing is always, as we always reinforce, making sure that you take all of your medications as prescribed by your doctor. And you heard me say all of your medications, right? So आपकी सारी दवाइयाँ, so जो भी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो सारी जैसे कहा गया है वैसे टाइम टू टाइम लेनी जरूरी है. और जैसे ब्रेंडा कह रही है सारी दवाइयाँ, right? क्योंकि maybe we can give an example, Brenda, about the how Okay. blood pressure. So some people think, well, I don't feel like I have high blood pressure and I don't think I have problems with my cholesterol, so I don't have to take it. So कुछ लोग सोचते हैं ना कि ओ मेरे को ब्लड प्रेशर की कोई तकलीफ नहीं, मेरा ठीक ही रहता है, या मेरी कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, उसकी कोई मुझे तकलीफ नहीं है. अक्सर ऐसा सोचते हैं ना, और फिर वो दवाइयाँ नहीं लेते हैं. Or, I think my sugars look pretty good. I'm just going to stop taking my medication. So या फिर शुगर जब चेक कर रहे हैं शुगर ठीक निकलती है तो वो कहते हैं अगर शुगर की मेडिकेशन हम लेना बंद कर देंगे या छोड़ देते हैं. And I always say to everybody, you know what? Your family and your friends and your neighbors, they're not your doctors. So always before you decide to stop a medication, you want to talk to your doctor first. So अक्सर होता है ना कि फैमिली मेंबर्स है, दोस्त है, नेबर्स है, हम उनकी बातों में आ जाते हैं ना, और वो जो बता रहे हैं उसकी इससे हम ये करते हैं कि वो बंद कर देना दवाइयाँ, पर वैसे नहीं करना है क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है ना. अब सबसे पहले कोई भी हो आपके डॉक्टर से सलाह मशवरा करना बहुत जरूरी है दवाइयों के बारे में. Okay. खुद से कोई भी दवाई बंद नहीं करनी है ना, कम ज्यादा करनी या बंद कर दी ये नहीं कर सकते हम. So now let's get into tips about making sure that you keep your feet healthy. तो अब जो है हम टिप्स के कुछ टिप्स देंगे जिससे हम हमारे जो पैर हैं उनको हेल्दी रख सकते हैं, राइट? सो कहते हैं ना हेल्दी फीट, अगर वो सही है तो हैप्पी फीट है तो आपका सब सेहत भी सही रहेगी. और आपको क्या लगता है हम क्यों कह रहे हैं कि पैरों की देखभाल जरूरी है? आई एम जस्ट आस्किंग देम अ क्वेश्चन, व्हाई वी आर, या क्या आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों हम इतना उस पर जोर दे रहे हैं? या हाँ नरेंद्र जी आप अनम्यूट कर लीजिए. नरेंद्र जी. Because they carry our body, weight of our whole of the body. Exactly. Right. Exactly. They're going to get you from one place to the next, right? Without good feet, you're stuck in a chair all day long, right? सबसे जरूरी है, राइट? हमें चलना फिरना सब कुछ, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो पैर ही काम कर रहे हैं ना. तो अगर पैर ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे तो आप बस एक जगह ही बैठे रहोगे ना कुर्सी पे ही. तो इसीलिए पैरों की देखभाल बहुत जरूरी है. Okay. So every day you want to look at your feet. You want to make sure that there's no cuts, there's no redness, there's no swelling, sores, blisters, corns, or calluses. Was that too much, Meg, or are you good? Yes. तो रोज जो है हम पैरों पर नजर डालना है. सो पैरों पे देखना है कि कोई कट्स तो नहीं है, जख्म तो नहीं है, या फिर जो है कॉर्न्स है, कैलसेस है. What was the other thing, Brenda? What am I missing? Corns, calluses, blisters, cuts, swelling. One thing more. हाँ, और पैरों पर सूजन भी आती है ना कभी कभार, तो ये सारी चीजें देखनी है. हाँ जी नरेंद्र जी. One thing, fungus also. फंगल. Yeah. So जब नाखून का ये देखते हैं तो नाखून भी उस पे कोई ये तो नहीं है, कट्स है या फिर फंगल इन्फेक्शन जैसे आपने कहा, तो उस पे भी ध्यान देना है. तो रोज जो है आप पैरों पर नजर डालें. तो अगर वो हम दोनों पैरों पे जैसे आप शॉवर लेके आते हो तो एक बार नजर डाल दोगे तो आपको पता चलता है. Okay. If you can't, and it's always a good idea to look at the bottom of your feet. If you can't see the bottom of your feet, and I don't know where my mirror went to, you just get a little mirror that you can flash underneath your foot so that you can see if there's any problems on the bottom of your feet. Narinder ji has a mirror, she's showing there. Excellent. Perfect. Thank you, Narinder. So if something like that, you can use, put it down and look at your feet to make sure that there's
no cuts or bruises, etc. Thank you, Narinder. Yeah. नरेंद्र जी का था, Okay. ठंडी था ना। सो जो है पैरों के नीचे भी देखना जरूरी है, जितना कि हम ऊपर देखते हैं पैरों के नीचे भी कोई ब्रूसेस तो नहीं है, कोई कट्स है, कोई फोड़े फुंसी। और बहुत बार अक्सर क्या होता है कि हम पैरों के नीचे नहीं देख पाते हैं ना, तो आप मिरर का इस्तेमाल कर सकते हो, जो नरेंद्र जी ने दिखा ना, तो वो मिरर लेके, अगर मिरर आपके पैर के नीचे आप रखोगे तो वो आप देख सकोगे, उसमें मिरर में दिखाई देगा कोई कट्स वुंड्स है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह देखना जरूरी है। And if you don't have a mirror, get one of your family members to have a look at your feet. Okay? और अगर मिरर नहीं है तो आप किसी फैमिली मेंबर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो ना कि एक नजर डाल दे आपके पैरों के नीचे और देख ले कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। Okay, so the next thing we want to talk about is making sure that you wash your feet with warm soap and water. Just use a cloth with a little bit of soap and wash your feet. Even make sure that you're washing in between the toes. तो रोज जो है पैर जो है वो धोने जरूरी है ना, तो पानी और साबुन से धोने। और जब आप धोते हो तो वो वॉश क्लॉथ से भी धो सकते हो या वैसे भी। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि उंगलियों के बीच में भी धोना है पैरों का। अक्सर होता है ना कि हम ऊपर और नीचे से करते हैं, तो बीच में भी जरूरी है अच्छे से वॉश करना। Okay, make sure you rinse off the soap. All right. साबुन है वो पूरी तरह से निकाल लेना है। Now, sometimes you might have some rough skin at the heel or maybe up by the toes underneath. You can just take something like a pumice stone and gently brush it across the rough areas. You heard me say gently. Don't scrub at it like you're scrubbing all your laundry, okay? Gently take it so that some of the skin will come off. And each time you shower, you can gently do some until it comes down. So, अगर जो डेड स्किन है पैरों के नीचे तो वो आप जो है रगड़ के निकाल सकते हो, लेकिन जैसे ब्रेंडा ने कहा हल्के से वो रगड़ना है ना, जेंटली। आप अगर जोर से वो करने के तो वो नुकसान पहुंच सकता है ना। और जो है वो प्यूमिस स्टोन ये मिलता है, आप उससे भी कर सकते हो। सो कुछ लोग है वो पत्थर भी, वो है ना रीठा जो है वो पत्थर से भी निकालते हैं, तो वैसे हल्के से वो आप घिस के निकाल सकते हो, लेकिन बहुत जेंटली करना है। Okay. Now, after you rinse off all the soap, you want to make sure that you're... Sorry, excuse me. Brenda, Yeah. Can we use the electric one? Electric. Like For you the mean... For the the only thing I'm thinking about that is if somebody uses it too hard, it can really scrape down the skin, right? And if they're not familiar with that, or they might even have nerve damage already, if they go too much, they're not going to be able to feel it. And sometimes with those electric ones, it takes way too much off, whereas using a manual pumice stone, you can slowly take off the rough area. Okay. Okay. मैनुअल से हम धीरे धीरे कर सकते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक इसमें उतना वो कंट्रोल नहीं जाएगा ना। तो अगर किसी को ऑलरेडी नर्व डैमेज है तो वो और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। I mean, I'm not saying that you can't use it, but you just want to be cautious that a lot of people seem to think I need to take all the callus off right away. And you don't need to take it off all right away. And we still need a little bit of callus, but sometimes people keep going and they're too over eager to get rid of it, right? तो वो थोड़ा बहुत अगर जमा भी है वो स्किन कैलस है तो वो कोई उसमें हर्ज नहीं है ना, तो वो पूरी तरह से पूरा ही निकालना ऐसा जरूरी नहीं है, और वो धीरे धीरे निकालना है, एकदम से सब कुछ निकालने की कोशिश नहीं करनी है। Okay, so now let's talk about keeping our feet covered, wearing slippers when we're inside the house. तो जो है अब पैर जो है वो कवर्ड, वो बंद रखने हैं ना। सो घर में अगर आप होते हो तो वो स्लिपर्स पहनना जरूरी है ना। Right? Because if you go barefoot in your house, even though you might be walking on carpet or hardwood, the constant walking back and forth can cause friction, which can increase that roughness or buildup of callus.
सो अगर आप बेयरफुट बिल्कुल नंगे पाँव चल रहे हो घर के अंदर, तो जो है वो बहुत बार होता है ना कि वो फ्रिक्शन होता है ना कि वो घिसता है, पैर जो है जमीन पे घिस रहा है, तो वो और ज्यादा कैलस और डेड स्किन भी ज्यादा बढ़ सकती है ना। तो इसलिए पैरों में कुछ ना कुछ पहन के रखना है अगर घर पे भी हो तो तब भी। Okay. When you're going outside, you never want to be barefoot. And especially when you go to the beach and you're walking on the sand, you really should have something to cover your feet. Maybe something as simple as a pair of water shoes so your feet aren't open. तो अभी Exposed. गर्मियों में होता है ना कि हम बीच पे जाते हैं तो अक्सर जो है हम कुछ पहनते नहीं है पैर, तो वो खुले वैसे नहीं छोड़ने हैं, तो कुछ जो है वो इवन उसमें पहन के रखो कि आप बीच वेयर का, तो वो भी चलेगा ना। तो लेकिन पैरों में वैसे नंगे पाँव बिल्कुल नहीं चलना है क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। When my boys were little, it wasn't uncommon for me to find little toys in my shoes. So whenever you go to put your shoes on, make sure you tip them upside down and make sure there's no little toys or anything like that sitting in your shoes. So अक्सर हम जब जूते पहनते हैं तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं, आपके छोटे बच्चे ग्रैंड किड्स हैं, तो अक्सर होता है ना कि वो शू में कुछ ना कुछ डाल के रख देते हैं ना, छोटे टॉयज डाले हैं या और कुछ डाला है, तो हमेशा जो है शू उल्टा करके फिर वो पहनना है ताकि उसमें कुछ हो तो वो निकल जाए ना, नहीं तो वो पैरों में चुभ सकता है ना। So, and you always want to make sure that your shoes fit you well, that they're not too small and they're not too big. और जो शूज है वो प्रॉपर फिटिंग के होने चाहिए, एकदम से छोटे भी नहीं होने चाहिए और ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़े है ना, लूज भी नहीं होने चाहिए। So when you're checking if your shoe is too big, 1 finger width down the back is a good amount of space. If you're more than that, then your feet are going to slip and slide in the shoes. So वो शू प्रॉपर फिटिंग है यानी कैसे पता चलेगा? तो जब आप उंगली डाल के देखते हो तो एक उंगली जाए उतनी स्पेस हो, उसमें जगह हो, तो उतनी ये प्रॉपर है। अगर उससे ज्यादा है तो उसका मतलब वो लूज है ना, तो फिर जो है पैर वो आगे पीछे होगा तो उसमें और ज्यादा घिसेगा, तो इसलिए प्रॉपर फिटिंग वाले शूज जरूरी है। You don't want too big of a heel, so you don't want a heel that's going to be like this, but you don't want a flat heel either. So heels जो है बहुत ज्यादा बड़ी हील वाला भी नहीं चाहिए या ऐसे भी नहीं चाहिए जूते की जिसको बिल्कुल ही हील नहीं है, एकदम से फ्लैट है तो वो भी सही नहीं है ना, थोड़ी बहुत जरूरी है पर हल्की सी, जैसे उसने दिखाया वो थोड़ी हील है उसमें जूते में। So a 1 to a 1.5 maximum 2 inch heel is as high as you want to go. So 1 या 1.5 इंच अगर हील है तो वो सही है वो जूते के लिए। I know that some of the ladies' shoes and even the men's dress shoes are quite fancy and they're quite pointy and they're quite high heel for the ladies. And I know you want to look pretty in your saris, but think about your feet. If you have to squeeze your feet into little tiny narrow fronts, or you're wearing high heels, it's going to hurt your back. It's going to hurt your feet. Okay? तो अक्सर जो है पार्टी में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो लेडीज है ना कि हाई हील वाले पहनती है ना, जूते पहन रहे हो या बहुत आगे से बिल्कुल ही नैरो है, उसमें जगह नहीं है, तो वो दिखने में तो बड़े फैंसी लगते हैं लेकिन पैरों के लिए वो नुकसान दे सकते हैं ना, क्योंकि वो इतनी देर अगर आप पहन के रखोगे तो पैरों को तो हो ही रहा है मुश्किल वो फिटिंग में, लेकिन आपको जो है कमर में दर्द, पीठ में दर्द हो सकता है, तो बाकी तकलीफें भी हो सकती है। आजकल इवन मेन के जो शूज है वो भी ड्रेस शूज काफी बार वो फैंसी होते हैं ना, तो आगे से बहुत ही पॉइंटी और बिल्कुल नैरो से होते हैं ना, उसमें आगे जगह ही नहीं होती है, तो वो आगे वाला जो पैर है वो बिल्कुल दब जाता है ना, तो इस तरह से वो पैरों को ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए शूज जो है वो प्रॉपर फिटिंग और कंफर्टेबल होने जरूरी है। Okay. You also want to make sure that the box, what we call the box of your shoe, is not too narrow. So if your feet are like this thick, and you're trying to squeeze them into something this thin, it's going to injure your feet. So you want to make sure that the box of your shoe is not too big and it's not too small, but your feet can go in without your toes rubbing on the top of your shoes. तो वो जो बॉक्स है वो शूज का वो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल उतना होना चाहिए, बहुत कम ये भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, उतना होना चाहिए कि आपका पैर अच्छे से उसमें से सही चला जाए बीच में और वो उस पे घिसे ना, कि बहुत ज्यादा अगर वो ये है या टाइट है तो भी अंदर घिसने की भी चांसेस है ना।
Okay, and you want to make sure that your shoes are more like squared off as opposed to pointy, so a bit more round square than pointy. तो आगे से भी जो है ना वो अगर राउंड है या स्क्वायर्ड है तो वो ज्यादा अच्छा है, अगर पॉइंटेड है तो वो एकदम से फिर वो सामने वाली जो उंगलियां हैं वो दब जाएंगी ना, तो इसलिए राउंडेड वाला अच्छा है. Oh, I lost my train of thought. My goodness, where was I going next? About we can ask the question about what is a good Yes. time. First of all, I know what I wanted to say. You want to make sure that something like lace-up shoes or shoes with Velcro, they're the best type to wear, because if your feet start to swell during the day, you can loosen the laces or loosen the Velcro so that your shoes aren't so tight. So जो जूते हैं अगर उसको लेसेस फीते होंगी या वेलक्रो होगा तो वो बेस्ट है. वो उसका कारण ये है कि अगर लेट से जैसे जैसे दिन गुजरता है और पैरों में थोड़ी सूजन आती है, आप घूम फिर के चलने के बाद उस पर सूजन है, तो आप वो लूज कर सकते हो अगर लेस या वेलक्रो वाला है ना. अगर लेसेस या वेलक्रो नहीं है तो क्या होगा कि आपका पैर जब है उसमें वो टाइट होगा, तो वो और ज्यादा टाइट फिटिंग, जब जैसे सूजन आएगी और वो जूता अगर एडजस्ट नहीं कर सकते तो वो अनकंफर्टेबल होगा ना पैर के लिए. सो इसलिए फीते या वेलक्रो होना सही रहेगा जूते के लिए. So, in saying that, when do you think is the best time of day to go out and buy a new pair of shoes? So आपको क्या लगता है कि जूते अगर खरीदने हैं तो दिन में कौन सा टाइम सही है जूते खरीदने के लिए? नरेंद्र जी, आप It's evening. इवनिंग. प्रभा जी, आप? Whenever we feel comfortable. Whenever somebody will take you shopping, right? Yeah. एक ग्रुप में, I should share this, एक ग्रुप में मैंने और ब्रेंडा ने ये क्वेश्चन पूछा था कि जूते कब खरीदने चाहिए, तो उन्होंने कहा जब सेल पे जाते हैं तब बेस्ट टाइम है खरीदने का जूते. Yeah, somebody said the best time my family can take me. Okay, you're absolutely correct, Narinder. The best time of day is to buy your shoes near the end of your day, because if your feet start to swell, you want the shoes to be able to fit. If you buy them first thing in the morning when there may be no swelling of your feet, you buy those shoes, then later on in the day, they're going to be feeling too tight and they're going to hurt your feet. सो जूते खरीदने का सही टाइम जो है वो शाम का वक्त है. वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरता है पैरों में जो सूजन आती है तो वो शाम तक वो होगा ना, तो वो साइज जो होगा आपके जूते का वो सही होगा. लेट से अगर मान लो आपने सुबह खरीद लिया वो जूता, तो सुबह तो आपका वो पैर सूजन है ही नहीं ना, तो फिर बाद में जैसे जैसे शाम तक वो ये होगा तो वो जूता जो है वो टाइट होते जाएगा ना, क्योंकि जब पैरों में स्वेलिंग आएगी, तो इसलिए शाम को खरीदना बेस्ट है. राजेंद्र जी? सबसे अच्छा टाइम जब सेल चल रही हो, जब लेना चाहिए. Oh, okay. All right. So, let's talk a little bit now about taking care of your toenails. What do you think about that? What, Brenda, can we cover maybe socks also? Maybe that might be. Yeah. Okay. I was going to do that later. So, when you're buying socks to wear, you have to keep in mind, if the socks are really tight, then they potentially can cause swelling. So it'll cause swelling above where the sock is tighter. Okay? Go ahead, जो मोजे जराबे हैं अगर वो बहुत ज्यादा टाइट है तो उसकी वजह से भी वो अक्सर जो है स्वेलिंग सूजन आ सकती है ना. सो वो ऊपर वाला हिस्सा टाइट नहीं होना चाहिए, ऊपर या नीचे ना. Okay. So you want to make sure that the socks that you're getting have a good stretch. See the stretch? And it's not too tight at the top. These particular ones are socks for people with diabetes. They are a little bit more money than regular socks. And they usually come, I think, 3 in a pack. तो ये जो सॉक्स वो दिखा रही है ये डायबिटीज वालों के लिए है सॉक्स, और ये देखोगे आप ये खुले खुले हैं, ऊपर से भी उतने टाइट नहीं है ना. और जनरली ये जो है ये 3 का पेयर आता है इकट्ठा, वो एक साथ होता है. Okay.
the other thing is if you do have socks that you're not maybe purchasing actual socks for people with diabetes, is often you can stretch this and sometimes it'll help loosen the elastic so it won't be so tight. So अगर डायबिटीज वाले सॉक्स नहीं भी है, दूसरे भी सॉक्स है, तो भी वो आप खींच के थोड़े से उसको लूज कर सकते हो ना, ताकि वो उतने टाइट नहीं होंगे. So remember I said never to go barefoot, right? Right? You also should always wear socks in your shoes. तो बिल्कुल जो है बेयरफुट नहीं जाना है ना, वो हमेशा जो है जराबे मोजे पहन के रखना है. Again, if you don't wear socks, your feet are going to slip and slide in your shoes, which causes friction, which can cause more roughness. So अगर आप जराबे नहीं पहनोगे तो क्या होगा कि जब आप पैर जूते में डालोगे तो वो ज्यादा घिसने के चांसेस है, पैर उसमें घिसेगा और वो नुकसान दे सकता है ना, इसलिए जो है मोजे जराबे पहन के रखने हैं. When I talked about washing your feet, I forgot to mention about moisturizing. So you can get a moisturizer cream, put on the top of your feet, on the bottom of your feet, give extra around the heels, but nahi between the toes. See that? I spoke some of the language. So जब वो एक और चीज जो वो कह रही थी, जब पैर हम कहते हैं ना धोने की बात करते हैं वॉशिंग, उसके बाद जो है उसको मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना भी जरूरी है. मॉइस्चराइजिंग करना तो जो है पैरों के ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, और जो हील वाला पोर्शन है वहां पे थोड़ा ज्यादा जरूरी है, और उंगलियों के बीच में बिल्कुल नहीं लगाना है. So उंगलियों के बीच में नहीं, सिर्फ ऊपर नीचे और एड़ियों पे आप लगा रहे हो. So if you put the cream between your toes and it hasn't completely gone in, it can actually cause your skin to break down, maybe cause it to open up an opportunity for bacteria to get in, or it could cause a fungal infection. So अगर आप वो उंगलियों के बीच में लगाते हो तो उसमें बहुत बार वो नमी रह जाती है ना, तो नमी रहने के कारण बहुत बार ये हो सकता है कि वो क्रैक ओपन हो सकते हैं, और उसकी वजह से फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं ना, इसीलिए उंगलियों के बीच में नहीं लगाते हैं हम. Okay, so now what I'll do is I'll get Meghana to pop in the pictures of what it looks like, how we should cut our toenails so that we don't cause potential further damage to our feet. So जो है अब नाखून के बारे में, नाखून की देखभाल और किस तरह काटने चाहिए उसके बारे में, तो मैं एक पिक्चर एक्चुअली शेयर करने वाली हूँ जिससे हमें आसानी हो ये बताने में. 1 मिनट में. ओके, दिखाई दे रहा है सबको, नजर आ रहा है? Yes. Okay, good. Okay, perfect. So move it down a little bit. Okay. So first of all, before we talk about that, I want to talk about the appropriate type of clippers to trim your toenails. So जो नाखून काटते हैं ना, so जो नेल क्लिपर है, नेल कटर है, वो दिखाएगी कि किस तरह का होना चाहिए. Okay, so first of all, I don't know if you can see this. Wait a minute. What am I doing? Okay, can you see how this is at an angle? Yes. Okay, so this is not a good type of nail cutter, because it's not going to cut your toenail straight across. It is going to cut at an angle, and you risk leaving some of the toenail stuck in the corner there. तो बहुत बार होता है ना कि वो जो नेल क्लिपर्स है वो एंगल वाले होते हैं, तो एंगल वाले होंगे तो क्या होगा कि जब आप नाखून काटोगे तो ये चांस है कि वो थोड़ा सा नाखून का हिस्सा रह जा सकता है ना, तो वो जो है फिर उसमें वो इन्फेक्शन आगे वो उसमें अंदर जाने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं ना, तो इसीलिए जो है एंगल वाला बिल्कुल नहीं लेना है ना. And then there's another type of toenail clipper, which I forgot, I don't have it in my bag, but the toenail clipper kind of, I don't know if you can. So that maybe stop sharing from so that so that you can do that. Yeah, so the toenail clipper that I'm talking about is one that I'm going to draw a bigger picture, just a minute. क्योंकि वो टोनेल क्लिपर्स भी अलग अलग तरह के आते हैं ना,
और बहुत बार होता है ना कि हम ये सारे वो फैंसी देख के वो उठाते हैं, पर वो ज्यादा नुकसान कर सकते हैं ना, वो ठीक तरह से काटे. You see my little diagram? There's toenail clippers that kind of have this dip in them. सो जो टोनेल क्लिपर है बहुत बार अंदर वो ऐसे अंदर की तरफ वो डिप मुड़ रहे हैं ना, अंदर की तरफ जा रहे हैं. So again, if you clip your toenails with this type of nail clipper, you potentially can leave some of the side of the toenail stuck in the side of the foot, like that could grow into the side of the foot and cause an ingrown toenail. तो अगर वो क्लिपर से काटोगे तो हो सकता है कि वो जो है एक साइड से वो जो है रह जाएगा वो टुकड़ा ना नेल का, और वो अंदर की तरफ जा सकता है ना, जो इनग्रोन टोनेल ना, तो वो इसलिए ये वाले नहीं इस्तेमाल करने हैं. Can you see this one? This one is straight across. There's no angle and there's no dip. So this is your better type of toenail cutter that's going to cut your toenails straight across. Okay? तो वो जो है ये सीधा वाला है, तो ये सीधा वाला होगा तो ये स्ट्रेट आपका सीधा वो कटेंगे ना नाखून, तो और अच्छे से भी कटेंगे ना. Okay? But we have never noticed this thing. हाँ, सो नेल का क्लिपर आपने देखा होगा, अगर बहुत बार वो एंगल वाले होते हैं, कुछ जो सामने दिखता है वो ही उठा लेते हैं, हमने ये नोट नहीं किया कभी भी. क्योंकि वो डिपेंडिंग ऑन दैट, क्योंकि वो काटने के टाइम क्या होगा कि अगर एंगल वाला है तो वो सही तरह से नहीं कटेगा ना, तो अगर पीस छोटा टुकड़ा है क्या साइड से, ये तो बाय चांस एंगल वाला ही है. Yeah, that one's got a dip in it. Yeah. So I think I bought this just at the drugstore. Yeah, I think I've seen them in the dollar store too. स्टोर टू है. Okay. वो जो है वो सीधे वाले जो कह रही हो डॉलर स्टोर में या फार्मेसी में कहीं से भी मिल सकते हैं ना आपको. Okay, so Meghana's gonna pull up that picture again. It's gonna Yes, show I see. you why we say to cut your toenail straight across. Okay, so you can see on the top picture, the one to the short one, Meg, it says short. Yes. See how that person has cut the toenail too short. You don't want it to go too far down below the top of the nail. तो Okay. ये आप देख रहे हो ये एकदम बहुत ही शॉर्ट बार वो अंदर तक काटा है ना, तो ये आप देख रहे हो कि इधर वो नजर आ रही है ना, वो नीचे की स्किन भी दिख रही है, इतना अंदर तक काटा हुआ है ना. Then the next one, you can see that they rounded it into the corners. You don't want to round it into the corners. ये जो सेकंड वाले में आप देख रहे हो कि ये जो कॉर्नर्स है वो बिल्कुल अंदर तक यहाँ पर कटे हुए हैं ना, तो ये राउंड इतना नहीं करना, हमें कॉर्नर्स में नहीं काटना इतना ना, इतना ज्यादा कि अंदर की तरफ. And then the next one, they've kind of cut the toenail so it looks like a bit of a V. और ये तीसरा जो है ये ऐसा काटा है कि ये वी शेप में कटा हुआ है ना, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ज्यादा काटा है और ये वी शेप में है, तो ये भी सही नहीं है. So each time you cut the toenails like either of those two, you can see at the edge of where the nail meets the skin, that's where you potentially could leave a bit of the nail which can dig into the skin and cause an infection. So हम हर बार अगर इस तरह से जो दिखाया है ऐसे अगर हम नाखून काटते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि वो छोटा टुकड़ा जो है नाखून का वो रह सकता है वहां पे ना कॉर्नर में, और वो रह गया तो फिर इनग्रोन टोनेल के चांसेस ज्यादा है ना, अंदर की तरफ वो जा सकता है, तो इसीलिए तरह से नहीं काटना है. And then the last one is a proper cut where you're cutting straight across. If the edge of the toenail is jagged, just take your nail file and file the edge of that nail. तो जो लास्ट वाला है ये सही तरह से कटा हुआ है नाखून ना, आप देख रहे हो इसमें उन्होंने सीधा काटा है और जो साइड से जो है वो नेल फाइलर से फाइल कर दिया है साइड के जो है जैसे ना, तो ये बिल्कुल इधर से भी सही है ना सब जगह से, तो ये सीधा. So Meg, just scroll down a little bit just to reinforce. So you see the first one, that's where it's showing you what an ingrown toenail means. When a bit of the toenail digs into the skin, it cuts it, and then bacteria can get in and cause an infection.
तो ये इनग्रोन टोनेल जो हम कह रहे हैं, ये देखो थोड़ा सा वो रह गया तो वो अंदर की तरह अंदर चला गया है ना, और इसकी वजह से जो है फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है ना, क्योंकि एक छोटा टुकड़ा रह गया है तो वो अंदर की तरफ जाना है. Okay. All right. So I think we're good with sharing. Yeah. और ये जो we can just show them this one. Yeah. Yeah. तो इसमें वो ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये सही तरह से कटा हुआ है. ये वाला भी जो है इसमें थोड़े से वो रह गए ना, टुकड़े रह गए इधर कॉर्नर की तरफ ना, तो ये बीच वाला जो है ये सीधा कटा हुआ है. ओके. Okay. क्वेश्चन है, कुछ पूछना है इसके बारे में, नाखून के बारे में? Any questions so far? I think Meeta ji. Yeah. Hi. Yeah. Thank you, Brenda. Thank you, Meghana. Excellent session going on. My question is about compression socks. I've been suggested by someone to use. Okay, so compression socks are often recommended by a doctor. You need a prescription for those, and you need to be fitted properly for those. So you go somewhere where they sell them. They measure your leg. So depending if it's going to be the ones that just go up to the knee, or if it's going to go all the way up like a full stocking. And they have to do proper measurements of those support stockings. Okay, So we should I'll not let- go by the ones we get on Amazon or what? No. No, No. because first off, your doctor is going to recommend a certain tension of those compression stockings, Okay. and then they have to be professionally measured, right? So because if those compression socks are not fitted properly, it can cause issues. तो वो कंप्रेशन सॉक्स जो वो फिटिंग सही होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर वो नुकसान कर सकते हैं ना. तो इसलिए वो प्रॉपर वो उसके मेजरमेंट्स और प्रॉपर आपके लिए जो सही है वो फिट होंगे वैसे जरूरी है. और डॉक्टर वो लिख के देंगे कि कितना उसमें होना चाहिए टेंशन और ये, तो उस हिसाब से आपके लिए वो टेलर मेड बनेंगे ना. And the purpose of compression stockings, if people, I know people are probably wondering, is often people with circulation problems, maybe problems with varicose veins. They recommend those to help to perhaps reduce the discomfort associated with varicose veins and or to improve somebody's circulation. Okay. तो वो वेरिकोज वेन्स की अगर तकलीफ है और या फिर सर्कुलेशन खून का बहाव उसमें अगर प्रॉब्लम्स है तो फिर ये वाले जो सॉक्स है वो रेकमेंड करते हैं. Thank you. All right. And when you're traveling, that brings a good a little nod to my head, Meeta, thank you, is when you're traveling, you want to make sure, you know, when you go back home and you're on a 14, 15, 16-hour flight, you want to make sure that you're able to get up and walk up and down the aisles to keep the circulation going. When you're sitting in your chair, make sure that you're moving your feet, you know, tipping to the floor, pointing to the sky, rotate your feet around so that you can keep that circulation going when you're up, you know, on that airplane for a really long time. Okay. तो जब हम ट्रैवल करते हैं और एयरप्लेन में होते हैं तो वो लंबा सफर है ना, तो इतने घंटे हम एक ही वो जगह एक ही पोजीशन में बैठे रहे तो उसकी वजह से खून के बहाव सर्कुलेशन पर असर पड़ सकता है ना. तो बहुत जरूरी है कि हम जैसे थोड़ा सा बीच बीच में उठ के आयल्स के बीच में उधर चले या जो है पैर ऊपर नीचे करें या थोड़े से वो जैसे आप अल्फाबेट्स करें उस तरह से वो हिला सकते हो ना पैर, तो वैसे हिलाते रहना जरूरी है ताकि खून का बहाव उसमें चालू रहेगा और सर्कुलेशन सही रहेगा. I have a When question. I have a question, Brenda. Yeah. On the traveling, I mean the aeroplane traveling, what kind of shoes we should wear if we have the problem of swelling the foot? We should wear the I mean tie shoes with laces Yes, or the exactly. Or the Velcro, because again, that's going to, if you know, some people when they travel on airplane, their feet automatically swell. So if you're wearing the lace-up shoes or the Velcro shoes while you're on that long flight, at least you can loosen the laces,
or loosen the Velcro so that the feet aren't going to swell even more. Okay? So, is it not better that we should wear the open shoes? I mean, not the, Like open-toed shoes, you mean? yeah, the sandals. So again, remember you want to protect your feet. It's not to say that you can't wear sandals, but if somebody who has nerve damage to their feet, something as simple as a pair of sandals, they could hit their toe, they could walk into glass, and if they have nerve damage, they're not even going to feel that that's happened. So just if you're wearing sandals, you always want to be mindful of that if you're wearing them, that you're safe, that you're not at risk of injuring your feet because you're wearing open-toed shoes. Okay? Thank you. खुले जूते Okay. तो वो चोट लगने की संभावना ज्यादा है ना, या किसी चीज पर आपने पैर रख दिया तो वो नुकसान कर सकता है ना, इसलिए बंद शूज और जिसको फीते हैं, वेलक्रो है, जो आप एडजस्ट कर सकते हो ना, तो जैसे पैरों में सूजन भी होती है तो आपको ये उसको लूज कर सकते हो. Right? Buckle shoes. क्या चीज? Anything. So Shoes any having buckles. हाँ, वो वेलक्रो या बकल जो एडजस्ट करते हैं, जो anything. that yeah. get adjusted, yeah. Yeah. Madan uncle want to ask some question. हाँ जी. Hello, Brenda. Yes. Can you? Okay, I am calling from England. Oh, well, hello. Oh, nice. Pip, pip to you. Thank you. I just traveled recently. Yes. I have a special socks for my feet. I have on one feet, which is a little bit painful or swells. Mm-hmm. Now, what you mentioned, I had the socks all day when I traveled. When I come to the home, after that I took them off, and now I'm wearing a regular socks. Should I keep those pressurized or special socks, as you were saying? Your doctor should prescribe it. Just this is done by the doctors, done Yes. by the specialist. I believe they are the special socks. Okay. So My question is here: should I wear every day regularly, or just So- on the flights when I'm So I flying? guess my question to you is, without knowing your medical history, it would depend on what your doctor advised. If your doctor said to you all day when you're awake, wear these compression stockings, take them off when you go to bed, if that's what they said, okay? If they said to you, Mr. Chauhan, I would like you to wear these compression stockings when you're flying, you're on an airplane, so that it keeps your circulation better. And then when you get off the plane, you could take them off if that's what they told you, right? But if they advised you to wear the compression stockings every day while you're awake, then that's what their recommendations would be. I hope that Okay. answers your question. Okay, this is what I was mentioned. Just saying to avoid the swelling Yeah, on the ankle, yeah, put it on. That's All- what was mentioned. yeah. Not that I have to do it. And also they're saying while I'm sitting, I should raise my foot, Yes. have some stool Yes. under my foot. Yes. Since I'm now another country, I'm doing a walking as well. Yes. And also you're doing other travels kind of Yes. when you're away on holidays. Yes. Some buses, some taxis, some walking. Right. And I did not keep it every day on, but most of the day I have a regular socks, but once or twice I have put it on, and that means I have to keep it all day because they're a little bit difficult or inconvenience to take them off and take them on because they're giving me plastic gloves. Yes. Yes. To put them Yeah. on and take Yes. them off. It Yes. takes a time and a little bit uncomfortable. Yes, yes. But Meg, if you can just maybe reinforce. So what I'm trying to make a point of is
follow the instructions of what your doctor gave you around wearing those compression stockings. So if they advised you to wear them for a certain amount of time each day, or just for when you're doing long travels, just follow those recommendations that the doctor gave you. तो Okay? आपके डॉक्टर जो recommendations दे रहे हैं वो फॉलो करना जरूरी है कि वो Thank you. थोड़े वक्त के लिए पहनने के लिए कह रहे हैं या फिर जब आप ट्रैवल करते हो उस टाइम पहन के रखना है, क्या कह रहे हैं ना, तो उस हिसाब से वो The reason I say थोड़े टाइम के लिए, because if it takes me about 10-15 minutes to put on, 10-15 minutes to take it off. right. Yeah, So I if I put it on, I keep it all day. Well, that's right. While you're awake and while you're moving around, you wear them. When you go to bed in the evening, Take it you off. take them off. Okay? Yes. That's what Okay. I'm doing. Good. Perfect. Okay, I'm Thank just you. gonna. Thank you very You're much for most your help. welcome. And it must be late over there. My goodness, it must be like 10 o'clock. It is. Right? It is about Yeah. 10 o'clock there. Okay, so I'm just gonna summarize because I want to be mindful of our time. Okay, so when you come to see us, if you're living with diabetes, it's really important that we do a foot assessment. I usually do it a minimum of once a year. If somebody has more damage, then I would do it more frequently than once a year. तो Okay. जो है जिनको शुगर की बीमारी है, तो आप देखते हो कि आप जब आते हो हमारे पास जो नर्स है वो फुट असेसमेंट करती है ना, और यूजुअली साल में एक बार फुट असेसमेंट करवाना जरूरी है अगर आपको डायबिटीज है तो। अगर उसमें पैरों में कोई तकलीफ है और हमें नजर आता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हो सकता है कि साल में हम ज्यादा बार करेंगे वो फुट असेसमेंट ना। तो डिपेंडिंग ऑन आपके पैरों में क्या इश्यूज है उस हिसाब से ये करेंगे, पर फुट असेसमेंट जरूरी है। Okay. And I'm sure you're saying to me, but Brenda, when do I know it's time to go and ask my doctor or to tell my doctor about my feet? तो आप सोच रहे होंगे कि कब हम पता चले कि ये टाइम है वो फुट असेसमेंट करवाने का, या डॉक्टर को कब बताना जरूरी है, उनको कब रिमाइंड करवाना है। Okay, so when you have pain in your legs or cramping in the thighs or the calves during physical activity, mention that to your doctor. तो अगर आपको पैरों में दर्द हो रहा है, आप देख रहे हो कि पैरों में या जो काफ मसल्स में उधर दर्द हो रहा है एंकल में, तो वो डॉक्टर को उस टाइम बताना जरूरी है। If you have tingling, burning or pain in your feet, सो अगर आपको पैरों में जलन हो रही है या जो है चींटियां चल रही है, ऐसे सेंसेशन अगर हो रहा है, तब भी डॉक्टर को बताना जरूरी है। Sorry So- to interrupt. Brenda, Prabha has a question. Prabha? yeah, हाँ जी, yeah, देखिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरा छोटा सा कि मैं 25 साल से डायबिटिक हूँ, डायबिटिक 2, और अभी 2 साल से जो ये महसूस होने लगा है कि मैं वॉक नहीं कर पाता, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक, हार्डली 100 कदम चल पाता हूँ। एकदम बदन में सुन्नी सी आ जाती है, सुन्न हो जाता है, नमनेस आ जाती है, नमनेस हो गई जी, और चला नहीं जाता तो मुझे बैठना पड़ता है। मैं रेगुलर 200 कदम नहीं चल सकता। और घर में भी अगर बाई चांस किचन में किसी वक्त चाय बनानी है या कुछ है, 2-3 मिनट खड़े होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नीचे का धड़, पैर और घुटने ये सब कांप रहे हैं, मुझे एकदम तुरंत आके बैठना पड़ता है। अगर नहीं बैठ पाता तो मैं गिर सकता हूँ। सो वीकनेस है लेग। उसके लिए डॉक्टर ने दवा पेंटीन वगैरह दी है, सुबह शाम 100 mg की, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पैरों की जो उंगलियां हैं, रात को जैसे ही मैं पलंग पे लेटता हूँ उससे पहले ये सुन्न हो जाती है। So numbness है, so there is numbness, Brenda, he has numbness in his toe. मैं सॉक्स पहने रहता हूँ हर वक्त, ये स्ट्रेच वाले सॉक्स हैं, और हर वक्त पहले रात को जब बहुत गर्मी लगने लगती है तब उतारता हूँ। अदरवाइज मैक्सिमम मैं समझता हूँ 24 घंटे में मैं कम से कम 18 घंटे तो पहनते ही। सॉक्स पहन उसके के बाद भी मेरी उंगलियां और अंगूठा ज्यादा सुन्न होता है। तो
डॉक्टर्स ने तो कह दिया हमने तो आपको दवाई दे रखी है ये, अब राइट इसके आगे क्या इलाज है हमें समझ में नहीं आता, हम आगे क्या करें। कोई अगर आप Right. लोगों के पास एडवाइस हो तो प्लीज बताइए, जिससे कि अंगूठे की और उंगलियों के सुनपना खत्म हो जाए और मैं थोड़ा वॉकिंग कर पाऊँ। और इनको बहुत देर तक मेरे को पैर मलना पड़ता है, तब जाके गर्म होता है, बहुत देर में पैर गर्म बदन होता है पूरा रात ठंड लाइक ठंडे पड़ जाते हैं, कोल्ड में। ये बहुत बुरी ठंडे, तरीके से, बिल्कुल बहुत मुश्किल से मैं इसके पैर गर्म करती हूँ, तो बड़ी देर में होते हैं, बिल्कुल ठंडे रहते हैं, बॉडी Cold. बिल्कुल ठंडी है। घुटनों तक और- ठंडा रहते हैं। और पैरों का वो ये किए फुट असेसमेंट करते हैं रेगुलरली, चेक कराते हो? तो आई नो क्या चीज? गाबापेंटिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, बट वो चेक कर रहे हैं, जिसमें वो जैसे ब्रेंडा कह रही थी वो मोनोफिलामेंट टेस्ट करती है ना, वो डू यू हैव द मोनोफिलामेंट ब्रेंडा? वी कैन शो देम। Yeah. सो वो एक्चुअल वो प्रिक करके वो दिखा रही है ना, सो ये बिल्कुल जैसे झाड़ू की जो होती है ना, तो उसके जैसा उसपे ये फील कर तो पता चलता है सेंसेशन का। तो ये टेस्टिंग होता है आपका रेगुलरली? नहीं होता, कोई नहीं करती। नहीं, ये कहाँ होता है हमें पता ही नहीं इस बारे में, that's why ना usually हमारे डॉक्टर ने कभी एडवाइस करा। राइट, सो डॉक्टर यूजुअली करते हैं या फिर वो रेफरल देते हैं शिरोपोडिस्ट को, जो शिरोपोडिस्ट है ना पैरों वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनके पास रेफर कर सकते हैं। सो एंड आई थिंक ये स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आया था ना, सो जो शिरोपोडिस्ट के बारे में, या कुलदीप जी आप कुछ कहना? हाँ जी, मेरी आवाज आएगी, पहले बताएं। हाँ जी, आ रही है ना? अरे मैं बताना चाह रही थी इनको कि जो इनके पैर नम होते हैं ना, बिसाइड्स द मेडिकल का जो भी है, तो ये अपने ईच टो को थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं। किसी है ना? को आवाज आ रही है? उंगलियां कैसे ट्विस्ट तो करोगे? उंगलियां है ना, जो पैरों की उंगलियां है ना, उनको जैसे मसाज करते हैं ना, वैसे दिन में 2 या 3 बार धीरे धीरे करके, टॉप को? स्लोली, वेरी उंगलियों के स्लोली। टॉप को? हाँ हाँ, उंगलियां जो पैरों में नमनेस होती है ना, इनकी हाँ, लेगी हाँ, होती है ना, तो पैरों की जो टोज में और सारे ईच टो और ईच जैसे उसको बोलते हैं जॉइंट ना, पैर के उंगलियों का ईच जॉइंट, उसको धीरे धीरे पकड़ के धीरे धीरे ऐसे ऐसे करें, है ना, तो उससे मतलब आराम भी मिलेगा, रिलैक्स फील होगा, और हो सकता है धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट शुरू करें। सर्कुलेशन की आप बता रही हैं, ट्विस्टिंग करनी, जैसे हम उंगलियों की करते हैं ना, हाथों की करते हैं, हमारे जो हाथ हैं उससे तो हम काम करते हैं ना कुछ, तो हाथ हमारे एक्टिव रहते हैं, हाथ की जितनी नकल्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन पैरों से हम सिर्फ चलते हैं और सारा बॉडी का वेट पैर लेते हैं, लेकिन पैरों को हम लुक आफ्टर मसाज के तरीके से करते हैं, वैसे नहीं करते लुक आफ्टर, है ना। तो उसकी जो ईच उंगली को ना थोड़ा थोड़ा करके ना टाइम दें, वक्त दें पैर को, तो उम्मीद है उससे इम्प्रूवमेंट होनी शुरू होगी, आपको अच्छा लगेगा। थैंक ऐसा लगता है जैसे नीचे घुटने के नीचे ब्लड ही नहीं जा पा रहा शायद। राइट, तो डेफिनेटली सर्कुलेशन इश्यूज है यहाँ पे। हाँ, वो बिकॉज ऑफ डायबिटीज होता है ना उसका, बिकॉज ऑफ डायबिटीज। तो और जैसे ब्रेंडा ने कहा था, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे साल गुजरते हैं, आप डायबिटीज के साथ रह रहे हो, तो ये चांसेस और बढ़ जाते हैं, राइट। वो नर्व डैमेज, नसों में डैमेज, सर्कुलेशन इश्यूज हो रहे हैं, so ये कर सकते हैं। So Brenda, maybe we can get a foot assessment done, right? He can come to our program, we can get that done, and then yeah. So ये हो सकता है राजिंदर जी, अगर आप चाहो तो हम फुट असेसमेंट की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आपके लिए। So maybe हमारी नर्स जो है वो चेक कर सकती है एंड देन देख सकती है ना। So क्योंकि वो फुट असेसमेंट जब ब्रेंडा करती है तो वो पूरा डिटेल में करती है, तो वो पूरा स्कोर आता है कि कितना है ना, कि किस तरह से, और वो सारा कुछ चेक करेगी। फिर वो पैरों का सर्कुलेशन है, नाखून है, पैरों का बाकी जो सेंसेशन है, सारी चीजें ना। एंड देन अगर रिक्वायर्ड है तो फिर हम वो शिरोपोडिस्ट को रेफरल भी कर सकते हैं, हम रेफर भी कर सकते हैं ना। सो देन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत हेल्प मिलेगी। जरूर जरूर। सो मे बी प्रभात जी एंड राजिंदर जी, मैं आपके साथ फिर बाद में ना कनेक्ट करूंगी। ओके, we'll arrange for it.
Thank you very much. यू वेलकम एंड जस्ट टू मेंशन जो शिरोपोडिस की हम बात कर रहे थे, सो हमारे एक्चुअली दोनों लोकेशन में, सो ब्रैम्पटन और जो मॉल्टन में, हमारी दोनों लोकेशन में शिरोपोडिस्ट है, पैरों की जो स्पेशलिस्ट है, वो स्पेशली जिनको डायबिटीज है ना, सो जिनको डायबिटीज की बीमारी है और काफी सालों से रह रहे हैं, तो उनको अगर इश्यूज है और अगर हमारी नर्स वो असेसमेंट करती है एंड कुछ प्रॉब्लम अगर नजर आता है तो वो रेफरल दे सकती है। अगर आपकी कुछ लोगों के जो कवरेज होती है, तो कवरेज है तो आप कम्युनिटी में कहीं पे भी शिरोपोडिस्ट को आप दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपकी कवरेज नहीं है तो अक्सर क्या होता है, ये शिरोपोडिस्ट जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। हर एक आप देखोगे हर एक विजिट के $70 से लेके वो इवन फॉलो अप्स वगैरह वो $200 तक जा सकता है ना, तो वो काफी एक्सपेंसिव है। तो अगर नहीं है तो फिर स्पेशली उन लोगों के लिए हम वो सुविधा ये कर सकते हैं और हम आपको रेफर कर सकते हैं हमारी शिरोपोडिस्ट को। Thank you. So I see Uzma raised her hand. And Uzma. Khalidji also I can see his. First of all, Brenda, excellent information you have shared, and the coordination between you and Meghana was amazing. Oh, thank you. Yeah, it's so synchronized so well. Thank Where you. she stops and you started. Number two, that do you have any for Brampton or for Malton, any postal code that you are serving? So Or for the diabetes program, you mean? Yes. Yeah. So for the especially for this one. For the diabetes program, it's if they live in Brampton, Bramalea, or Malton, they can access our diabetes education program. Where the postal code becomes an issue is if somebody wants to become a client of the whole organization. Okay, so to access the diabetes program, to see a nurse or a dietitian, for the nurse to assess the feet, as long as you live in Brampton or Brampton, Bramalea, or Malton, you can access either our Bramalea site or our Four Corners site. Okay. Thank you so much. And Bramalea, Brampton, Malton में रह रहे हो ना, and type 2 डायबिटीज, प्री डायबिटीज, और हम थोड़ा सा जो है प्रिवेंशन पे भी ये कर रहे हैं ना, क्योंकि जिनकी जैसे और बॉर्डर लाइन ब्लड शुगर भी जहाँ पर शुरुआत है, तो वो लोग, और अपने आप को सेल्फ रेफर भी आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर का रेफरल है ना, तो अक्सर हमारे पास डॉक्टर के रेफरल, स्पेशलिस्ट के, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के आते हैं, बट आप खुद भी अगर फोन करके अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो उनसे, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, एंड देन हम आपके डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ना। That's wonderful. So Meghana, Gulnaz is the lead for this program, and she will connect you with Prabhaji and Rajenderji, or Sure. anybody else who wants to be your client. Definitely, yeah. I don't know how much time do you have, because I have seen Khalid Gil Sahab, he raised his hand. Geeta ji, I can see Yeah, you. yeah, we have a few more. Sure, we have time. I just want to emphasize too that if, for example, a foot assessment is done and we refer you to our internal chiropodist, if you don't have private coverage for chiropody, we will refer you to our chiropodist. If you have private coverage where you are getting, somebody else is providing you that coverage through a benefit program, then we would refer you to a chiropodist out in the community. Okay. So which I just mentioned earlier, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि अगर आपकी कवरेज नहीं है तो हम हमारे जो इंटरनल शिरोपोडिस्ट है, इधर अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हो तो हमारी ब्रामली लोकेशन में जो है रेफर कर सकते हैं, मॉल्टन में तो मॉल्टन वाली शिरोपोडिस्ट को रेफर कर सकते हैं, बट अगर आपकी वो कवरेज है और बेनिफिट्स है तो हम असेसमेंट करके आपको कह सकते हैं कि आप वहां पर अपॉइंटमेंट बुक करें ना। Before I answer the questions, I want to make one more point. If you have any corns or thick calluses on your feet, I don't want you trying to remove them yourself. Okay? You need to go see your doctor. You need to have a nurse refer you to a chiropodist, but please do not remove warts, corns, thick calluses. Please don't try to remove them on your own. Okay? तो अगर वो कॉन्स है, फोड़े हैं, वॉट्स है, कुछ कोई भी है, खुद अपने आप निकालने की कोशिश ना करे। मैंने और ब्रेंडा ने देखा है, हम अभी ऑलमोस्ट 14 साल से साथ में काम कर रहे हैं, तो बहुत बार क्लाइंट्स आते हैं ना, वो ब्लेड से, सीजर से वो निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे और ज्यादा ब्लेड को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज आपके डॉक्टर को इमीडिएटली
सलाह मशवरा करें, अगर आप हमारे क्लाइंट है तो आप हमें बता सकते हो, तो हम आपको रेफर कर सकते हैं. Okay, Meg, were you keeping track of who's next for a question? Yeah. Oh, Khalid. Okay. Khalid ji, yes, Khalid ji. Yeah. Yes, go ahead. Khalid ji. Good afternoon to everyone. Hello. My name is Khalid Gill and I am living in Brampton. Uh-huh. Okay. So I have a similar problem with Rajinder, Mr. Rajinder. I am not covered, so I needed to check up to the shoppers. So that's why I would love to take your help in this regard. Okay. Thank you very much. Okay. So whoever's keeping track of the names of who will follow up with. So you would usually come in and see, have an assessment done, and then based on the assessment, we'll refer you to the chiropodist. Okay. So you have to be seen by one of the nurses in our program first before we refer you to the chiropodist. Okay. हमारे प्रोग्राम में आप पहले आओगे ना, हमारी नर्स वो फुट असेसमेंट करेगी और फिर वो रेफर करेगी. So Gulnaz is keeping a track. So फिर बाद में I'll connect with Gulnaz and then we can arrange for all those appointments. Okay. Thank you for kind consideration. Okay. And who else had a question? Yeah, Geeta ji. I don't have cover. The thing is that if I want to get yearly checkup of the foot care, which is very essential, I've seen amputation of one of our friends in the neighborhood because of this feet. His fingers were, all the toes were cut off because of diabetes. And so I don't want to get into that situation for that care, for the care of the body. If I want how to contact, will you please leave your phone number and all the things so that we can get in touch and get ourselves corrected. I don't have any symptoms as such. But no, but you're right. It's if you're living with diabetes, it's always a good idea to have your feet assessed at least once a year. So just like Khalid and just like Rajinder, we're good. We have a list going, and somebody will contact you about making that arrangements. Okay. Okay. I'm making a note of it too. साल में एक बार जो है वो पैरों का चेकअप करवाना बहुत जरूरी है. साल में एक बार. Okay. Anybody have any other questions? Yeah, I have a question. If somebody is a visitor and they are here on super visa, can they also assess your facility? So the problem with somebody being a visitor to the country, we do need to have a connection to a physician, right, Meg? That's so right. People on visas, we like on a visitor's visa, unfortunately at the moment that, because we have to be able to have communication if we have concerns around their health issues, right? So it kind of puts us in an awkward spot if we don't have the ability to communicate with a healthcare provider related to their care. क्योंकि कोई concerns हुए तो फिर अगर कोई डॉक्टर से हम कनेक्ट नहीं कर पाए तो हम फिर कुछ कर नहीं सकेंगे ना. So that's why sometimes कुछ urgent issues या anything raise होंगे. So that's why it's better कि अगर जिनके डॉक्टर है ना या कोई कनेक्शन है. So that's why अभी फिलहाल हम नहीं ले रहे हैं. Okay. Just on visa. But yes, अगर आप permanent resident के लिए आपने apply किया है और वो process में है and it's going to be processed within a few months, so special considerations कभी कभार वो हम कर सकते हैं, right? And what about refugee cases? So refugee again would depend करेगा अगर they are looking for, so we do take in, पर हमारी जो है again they have to go through a process, जो intake process है ना. So if they are looking for, let's say जो refugee है और हमारे ही primary healthcare को access कर रहे हैं, so let's say doctor है, nurse practitioner है, so those clients and they are living with diabetes, तो हम देख रहे हैं. So me and Brenda do see those, but जो हमारे healthcare center में देख रहे हैं उनको. Khalid Gill have question.
Yes, I am not have a question, but I would love to assist you in this matter. So if you are somebody or on the SOPA visa or visitor, if they are covered health and they took health insurance, then they are covered. And this is my suggestion, submission. They're covered to access healthcare in Canada, which means they could go see a doctor, they could go to the hospital if they have that insurance. But Megan, how do I explain that? Yeah. So आप सही कह रहे हो, जो इंश्योरेंस लेके आते हैं ना, सो वो इंश्योरेंस से जो है आप जैसे वॉक इन क्लिनिक में जा सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो, राइट? बट व्हाट हैपेंस इज हमारे पास जब आते हैं वी नीड टू कनेक्ट विद जो फैमिली डॉक्टर है ना, फैमिली डॉक्टर है या लेट से आपके स्पेशलिस्ट है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, सो उनसे कनेक्ट करके आना चाहिए हमको ना, क्योंकि इफ देयर आर कंसर्न्स या कोई इश्यूज है we have to have that connection. वॉक इन क्लिनिक वगैरह के डॉक्टर है तो हम उनसे नहीं कर पाते हैं ना कनेक्ट नहीं कर पाते ना, बिकॉज वहां पे चेंज होते रहते हैं, रोटेट, सो मुश्किल है. सो दैट्स व्हाई वो विजिटर वीसा वाले नहीं ले सकते हम. सो एनीबॉडी हु इज जो परमानेंट रेसिडेंट है, कैनेडियन सिटीजन है, लैंडेड इमिग्रेंट, सो दोस वी कैन टेक ना. बट आई एम PR, आई एम नॉट विजिटर. हाँ, राइट. PR है और कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay. Any other questions? So my last comment is, anytime your feet are paining or something's not right, please don't ignore it. Just like anytime your body is telling you something is wrong, please get it checked out. Don't ignore it. Okay? So last कहना जो इम्पोर्टेंट ये है कि पैरों में कोई भी तकलीफ है, आपको अगर दर्द हो रहा है, कोई भी आप देख रहे हो तकलीफ है, तो वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. वो तुरंत जो है डॉक्टर से सलाह मशवरा करना जरूरी है ना, क्योंकि पैरों की देखभाल ये बहुत जरूरी है. और ये पैरों की देखभाल इसलिए जरूरी है, स्पेशली डायबिटीज में और भी ज्यादा ना, इसलिए आप देख रहे हो हमारे जो डायबिटीज प्रोग्राम्स है उसको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग है ना, कि शिरोपोडिस्ट है जो पैरों की स्पेशलिस्ट है, जो वो देखभाल या वो स्पेशलिस्ट है जो केयर कर सकती है ना. Brenda, this information is only for the diabetic patients, or the normal person, if they have any issue with the foot, they can also... Okay. No, so unfortunately, the foot care program that is linked to us is linked through the diabetes program. So somebody needs to be somebody living with, as Meghana said, diabetes or pre-diabetes, because they have to also be linked with the diabetes program. They have to be seeing the diabetes team on a routine basis in order to access the chiropody care. So the foot care that we offer is part of the diabetes education program, accessing that as an extra adage. Okay, so somebody who's got an ingrown toenail that's not living with diabetes or pre-diabetes, our chiropodists, they would need to be seen in the community somewhere else, regardless of coverage, only because we have specific funding requirements around accessing the chiropody care. Okay. Chiropodist referral सिर्फ जिनको type 2 diabetes, pre-diabetes है ना, उनके ही कर सकते हैं. But जो tips provide किए आज हमने, वो सबके लिए है ना. अगर आपको diabetes नहीं भी है, तब भी आप वो पैरों की देखभाल कर सकते हो ना. जो आज हमने जो tips दिए, वो आप implement कर सकते हो. Excuse me. Yeah. Even the Parkinson patient, I've seen they have problem with the legs. Okay, so yeah. How can you help them? How can we help them? Well, unfortunately, if somebody's living with Parkinson's and they're not living with a comorbidity like diabetes, they would have to be accessing the programs in the community. They wouldn't be able to access through ours. So ours is strictly mandated, related to living with diabetes or pre-diabetes. Okay. Unfortunately, I wish I could tell everybody to come on over, but unfortunately we can't.
क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्री फंडिंग है ना, तो इट इज फॉर अ स्पेसिफिक ये। और हम इवन टाइप 2 डायबिटीज वाले जो हैं, टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटीज 18 साल की ऊपर जिनकी उम्र है ना, उनको ही देख सकते हैं हम। सो हमारे वो प्रोग्राम में बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया, 18 साल के ऊपर होनी चाहिए उम्र। अगर आप ब्रैमली, ब्रैम्पटन या मॉल्टन में रहते हो तब आप हमारा प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हो। And what about those who are just tourists? Again, that kind of answers the question somebody had about visitor permits. Somebody coming to the country as a tourist, no, there's certain parameters around which we have to follow. But they need also help, isn't it? They do need help. I understand that they need help, but of course we have to follow what our mandates are, right? Yeah, sorry. Yeah. Gita-ji, for them, they need to spend some money. Oh, we spend. We are ready to spend. But No, help should be given. so there are doctors. They can see them, and only they need to pay some fee. Okay, thank you. And that sum is sometimes a big sum. I know. Big amount. But they are insured. If they are insured. That's why I always say to people, when you're traveling outside of your own country, you need to make sure you have travel insurance, because you never know what can happen to you when you're out of your own country, right? So it's okay. Well, I would like to thank you for inviting us. I'm going to thank Amber for recommending us doing this presentation tonight. It certainly was a joy meeting all of you. At one point, I felt like I was a radio commentator, like I was a guest on a radio show. So thank you for inviting us. And I thoroughly enjoyed your questions and your insight into many things. Thank you so much again for having us. Thank you so much. बहुत मजा आया, and it was very nice, interactive, एकदम बहुत questions and very nice questions. तो आपका active participation भी था. And I know मैं और Brenda हमेशा Amber से सुन रहे थे कि she was saying कि बहुत अच्छा group है, बहुत बढ़िया, और वो हमेशा कहती थी we'll enjoy. So we are thankful to her and thanks to you all. Thank you so much, Usma, Gulnaz, for having us. So yes, it was an excellent program. Thank you so much, Brenda and Meghana. It was really so much valuable information. Informative program. I think many will benefit with your informations. I am benefiting. Well, and you know what? I always say to people, if you attend a seminar and you can walk away with at least one thing that you learned, that's one thing more that you didn't know an answer to, right? So we always strive to ensure that the education that we're providing is something that's usable for the people that are participating. So thank you. Yeah, absolutely. The feet are the most ignored part of our body, right? They are so important, get totally ignored. We ignore them like anything. So useful tips, yeah. And this is kind of awakening also. We need to take a lot of good care of our and बहुत सारी चीजें वो preventable है ना. So वो अगर right time पे अगर हम करते हैं वो पैरों की देखभाल, तो वो प्रिवेंट कर सकते हैं. So as somebody brought up a good point, वो amputations और इससे हम बच सकते हैं ना, उतना ज्यादा होते हैं. और हम इतने सालों की प्रैक्टिस में हम देख रहे हैं बहुत सारे क्लाइंट्स जब आते हैं ऑलरेडी वो काफी लेट हो चुका है ना. जब शुरुआत होती है वो इग्नोर करते हैं या डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, फिर हमें जब हमारे पास भी जब आते हैं तो काफी लेट हो चुका होता है ना. तो इसलिए राइट अवे अगर आप ये कर सकते हो तो हम वो बहुत सारी चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं. I'll give you one little quick interesting point. A lot of amputations that occur, like amputations of toes, feet, a lot of those occur in the diabetes population. So all the more reason to make sure that you take care of your feet. Okay, it's not something to ignore. Just keep in mind, highest number of amputations is in the diabetes population. Okay? So सबसे ज्यादा जो एम्पुटेशंस होती है वो जिन्हें डायबिटीज है, वो डायबिटीज वाली पॉपुलेशन में हम अक्सर देखते हैं सबसे ज्यादा एम्पुटेशंस है ना. इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि पैरों की देखभाल सही तरह से करना. Okay.
All right. Thank you. Okay. Well, Okay. thank you, everybody. Take care. And who knows, maybe my path will cross yours again, and maybe I'll do another presentation for you all, or I'll see you in the office to look at your feet. Okay? Okay. Most welcome, Thank Brenda. you. ओके फिर मिलने का मौका मिलेगा तो, या फिर आप जब हमारे प्रोग्राम में आ रहे हो या अपॉइंटमेंट बना रहे हो तब आपसे मुलाकात होगी. So nice of you. Very nice. Okay. Okay, Take thank care. you. Bye, Thank you. everybody. Bye. Have Thank a you. safe evening. Bye now.